So welcome back. This is lecture 11 of PGBP and this is for CMA Intermediate June 2022 attempt. ये हमारा lecture 11 है PGBP का and we had to start actual cost of assets. Okay. पिछले क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था एक्चुअल कॉस्ट का. ओके जस्ट अ मोमेंट. Right. So basically in short, what is actual cost is? First cost is a purchase cost. Apart from that, whatever is cost to bring the asset to your location, okay, all related costs before the asset starts production, everything comes under actual cost. ठीक है. यहाँ पे can see this example. This is a definition. Okay, actual cost means this is the definition given in the section 43 clause 1. Okay, actual cost means actual cost of the assets to the SSC. It is the actual cost of the assets to the SSC as reduced by that portion of its cost that has been met directly or indirectly by any other person or authority. ठीक है. तो ये बोल रहा है first it is the actual cost, the purchase cost plus all carriage and all that cost, and then you have to deduct if any other authority or person has taken some part of the cost. ठीक है. जैसे हमने देखे थे, we had seen in the first example, right? So asset purchased 5 lakhs, government grant received is 1 lakh, actual cost is 4 lakhs. Okay, 5 lakhs minus 1 lakh. ठीक है. So this is your actual cost definition which we have seen. Now we will be seeing some specific points or explanations on actual cost. Okay, all are very, very interesting, each one of it. So सबसे first ये है कि as if assets are acquired against cash. Okay, nowadays because various rules have come up for cash purchase, है ना, आपका limitations है उसमें. So aggregate of payments made to one person in a day. ठीक है. एक दिन में आपने जिसको पैसे दिए हैं, अगर if it is more than 10,000, ठीक है, so you will not be allowed to capitalize it. Okay, then you will not be allowed to capitalize it. ठीक है. यहाँ पे एक I will confirm that with you थोड़ा बाद में. मुझे बस ये एक चीज इसमें reconfirm करना है इस पार्ट में again, whether you know कि जैसे now 10,000 the limit is 10,000 per day. जैसे suppose 1 lakh is the cost of the asset. Okay, मैंने 4 दिन में पेमेंट किया है. 1 2 3 4 days I have made payment. ठीक है. तो यहाँ पे okay, this is in cash and this is in check. चेक क्या, चेक मतलब ये सारी चीजें होंगी इलेक्ट्रॉनिक व्हाटएवर ना, आप NEFT बोलिए, RTGS बोलिए, व्हाटएवर यू से. ओके, call it your Google Pay or Paytm, ठीक, all these things, any electronic means of payment, everything यहाँ आ गया. ठीक है. So this is all electronic means of payment. Second, पहला is cash means of payment. So cash में ये बोल रहे हैं कि आपको 10,000 जो है, 10,000 के ऊपर आपने जो पेमेंट किया है वो माना नहीं जाएगा. ओके, सो एंड दैट इज पर डे. ठीक है. ईयर से यू हैव पेड इन दिस 4 days, मैंने अगर 10,000 दिया हूं, ओके, सो आई पेड यू 10,000 इन कैश और बाकी सपोज दिस 40,000, करेक्ट. तो यहाँ पे मैंने एक 20,000 दे दिया और यहाँ पे 20,000, कितना हो गया 81 है, और एक 20,000 सपोज मैंने यहाँ दे दिया. चेक. ओके, सो दिस इज फाइन टोटली, इट विल गेट कैपिटलाइज्ड पूरा.
ठीक है, तब ये है जो इफ इट एक्सीड्स 1%, ठीक है, और ये पर पर्सन है, ठीक है, ये एक वेंडर से आई हैव बॉट दिस एसेट, आई बॉट दिस एसेट फ्रॉम दिस वेंडर, ओके, देन दैट आई माइट हैव अनदर ट्रांजैक्शन विद अनदर वेंडर, ओके, यहाँ पे आई माइट हैव पेड सम कैश, इसको और इसको आप टोटल नहीं करेंगे, ओके, दिस इज फॉर पर पर्सन, ठीक है, what cash I am paying to some other vendor that will not be considered in this case, ठीक है, तो ये है, तो बस मेरे को जो चेक बस ये करना है व्हाट कि मैंने जस्ट बेस्ड ऑन द वे इट इज फ्रेज्ड उतना मैंने देखा, इट डजंट से एनीथिंग डायरेक्टली बेस्ड ऑन द वे इट फ्रेज्ड, तो ये लग रहा है कि जस्ट if it exceeds 10,000 then that excess will not be considered, यानी for example if this is 12,000, ठीक है, तो दिस 2000 आपको कैपिटलाइज नहीं करने दिया जाएगा बिकॉज इट इज ओवर 10,000, ठीक है, बट एज आई एम सेइंग आई जस्ट कंफर्म दिस पार्ट विथ यू कि पूरा ही 12,000 आपको whole 12,000 will not be considered or only this difference 2,000 will not be considered, okay, this is one thing, okay, okay Shyam, so we'll just check that once again, okay, whether it's only the excess it is not considered or the whole part is not considered if the entire amount is paid in check, paid in cash, ठीक है, that's the only thing. So apart from that ये concept ये है इसका, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 10,000 तक till 10,000 you can pay cash, 10,000 के ऊपर whatever cash you pay, okay, that will not be considered, ठीक है, so this is one point, और इसमें what I'm going to confirm to you is whether if this has become 12,000 suppose only that 2,000 will not be considered or the entire 10,000 will not be considered, entire 12,000 will not be considered, कि वो पार्ट में कंफर्म करूंगा, ओके, इट्स नॉट वेरी क्लियरली रिटन, थोड़ा एग्जांपल्स आई हैव टू सी, नो डायरेक्ट एग्जांपल्स फॉर दिस, ठीक है, so मैं थोड़ा रिसर्च करके आई विल लेट यू नो दैट व्हाट दिस सेक्शन सेज इज, so based on how it is phrased it is like quite very much it says that such payment exceeds 10,000, so let's see, okay, I'll just confirm that part, ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट है मेरे को the way it is phrased कि वो क्लियरली बता नहीं रहा है कि एक्सेस ही इग्नोर होगा कि पूरा इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली बड़ा कैश ट्रांजैक्शन कोई कर रहा है then again there is no sense to just give him a credit of 10,000, correct, वो भी है, so let us see, ठीक है, I'll just do some research on this, ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है आप, तो पहला पॉइंट बेसिकली क्या है, आपको एक दिन में कैश पेमेंट अलाउ इज 10,000, you stay within 10,000 for one day, no problem, other whatever is remaining pay by electronic methods, ठीक है, what are the electronic methods, जो मैंने आपको बोला, जो भी electronic methods you know of all that, check, ठीक है, check, draft, bank draft, ECS, ये हमारा नेफ्ट एंड ऑल, ओके, दैट इज ECS, एंड देन योर अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड, जो हमारा पेटीएम पेटीएम ये सब जो है, गूगल पे, ऑल दैट, ओके, दिस काइंड ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है, तो ये बात है, तो पहले पॉइंट में हमने क्या देखे, एक्चुअल कॉस्ट में क्या आएगा, आपने कुछ ज्यादा ही कैश दे दिए अगर, तो दैट पार्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा तो उसमें नुकसान क्या आएगा बता सकते हो, what is the loss to me, थोड़ा जाता है तो चले जाए, सपोज मेरा एसेट इज 50K का एसेट है, ठीक है, तो थोड़ा मैंने कैश में दे दिया, तो 45K ही उन्होंने माना, 5K को उन लोगों ने डिसअलाउ कर दिया, तो व्हाट आई एम सेइंग इज आई हैव परचेस्ड फॉर 50K, ओके, and I've paid some excess cash and all that, so they have disallowed me 5K, so now it is capitalized is only 45K, so इसमें नुकसान क्या है मेरा, what is the loss, there's no loss as such, right, क्या हो गया, सब खाना खा के आराम आराम में आ गया दिखता सब,
You all had dinner. Sir, repeat again. खाना वाना हुआ क्या शिवम? कैसा था? How was lunch, dinner? Sir, still not taken, sir. ओके ओके, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम आस्किंग इज, आप 50K का मेरा एसेट है, माय एसेट इज ऑफ 50K, ठीक है, एंड आई हैव पेड सम एक्सेस कैश, ठीक है। मतलब अब ये जो है, so now they have disallowed 5K because of cash था, इसलिए total 5K they have disallowed, बोले आप 45,000 you can capitalize, okay। नुकसान क्या है मैं बोल रहा हूँ, what is the loss? कुछ नुकसान तो नहीं है ना मेरा, डिसअलाउ कर दिया तो कर दिया, disallowed has disallowed, come on participate everyone, अपना व्यूज आप Sir, रखो। there is a loss क्योंकि सर अगर वो कैपिटलाइज नहीं होगा एंड फॉर एग्जांपल इट इज अ परचेज ऑफ एसेट, तो सर उतने अमाउंट का डेप्रिसिएशन भी मुझे नहीं मिलेगा एंड देयर बाय टैक्स लायबिलिटी भी रिड्यूस नहीं होगी। वेरी गुड, ओके। इसमें क्या होगा, देखिए अगर मैं 50,000 में दे रहा हूँ, तो इसका पूरा डिप्रिसिएशन इतना मिलेगा ना, टू द एक्सटेंट ऑफ डिप्रिसिएशन मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है ना, इसमें मेरा प्रॉफिट उतना 5,000 कम रिड्यूस होगा, so I'll have to pay tax more on this 5K, okay, so that is why it is important. ऑल्सो सर, अगर हम उसको कम अमाउंट पे कैपिटलाइज कर लेंगे तो जो नेक्स्ट एसेट के लिए रिजर्व क्रिएट होता है वो भी कम हो जाएगा, मतलब डेप कम लगेगा तो जो हम नेक्स्ट एसेट परचेज कर पाएंगे वो भी 5,000 से कम हो जाएगा। करेक्ट, वो भी एक पॉइंट, वो भी एक है, इट्स आल्सो दैट, ठीक है। और बस मेन कंपोनेंट बस ये है, और एक चीज जो होता है ना, कि जब आप सब्सिक्वेंट सेल का भी आप सोचोगे ना, यहाँ पे आपने कम किया था, आपको जो गेन्स विल आल्सो बी मोर, जब कैपिटल गेन्स लगेंगे यहाँ पे, ये जब अगर इसको अब मैं 100 में बेचा तो मेरे को 100 का कैपिटल गेन्स लगेगा, ओके, बट इसको जब बेचा 100 में, देन फुकट पे मेरे को 55 का लगेगा, ओके। सो ऑल दिस इज आल्सो देयर, बट मेन पॉइंट जो है इसमें इज दैट योर डेप्रिसिएशन, वहां आपको डायरेक्ट और एकदम इमीडिएटली हिट होगा आपको फ्रॉम द करंट ईयर ऑनवर्ड्स, ओके। चलिए, गुड। सो देन assets acquired against cash हो गया एक पॉइंट, ठीक है। एक एक पॉइंट में बहुत मजा आते जाएगा। सर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन है सर? क्या अजीत, रिपीट कीजिए सर एसेट एक्वायर्ड अगेंस्ट कैश में ये कैसा क्वेश्चन देगा एग्जाम में? किसका? इसका ये इसका आपको हाँ सर। कुछ नहीं, ये आपको ये पूछेगा वो बेसिकली, ये 10,000 का लिमिट आपको मालूम है क्या, बस वो पूछेगा, ठीक है। कितना इसमें, अगर बोलेगा कि इसने कैश में एक्वायर किया है, ओके, और बोल दिया सपोज फॉर एग्जांपल हिल से कि 8,000 कैश में दे दिया है, ओके, समथिंग लाइक दैट, फिर वो तो उसमें वो टेस्ट करेगा कि आपको मालूम है कि नहीं कि 10,000 वाला जो क्लॉज है आपको आता है कि नहीं, बस उतना ही आएगा। So here, no, what Ajit has asked is this part, right, Nandini? This one, which I was explaining right now, right? Assets acquired against cash. So what kind of questions can be asked on this is basically they'll only test whether you know this 10,000 limit. Okay, like they'll just say that there's a 50,000 asset, okay, and he has paid 8,000 in cash, okay, and sometimes they will say 50,000 asset is there, he has paid 8,000, 8,000, 8,000 3 days, okay, and on the 4th day he paid the balance 26,000 by check, something like that. So how much will be allowed? It's like that. So only if you know this provision you can answer these questions, ठीक है। समझ गया ना अजीत? तो उस हिसाब से इसी के रिलेटेड में आएगा बेसिकली। ठीक है सर। ओके, देन नेक्स्ट वाला, आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, एक एक पॉइंट, however when we go ahead one by one point, it will go on become more and more interesting actually, okay। So here यहाँ पे now second is asset acquired by gift or inheritance. इसमें see again straight forward thing is that
Okay, what here, this point is again there. Depreciation allowed till AY 8788. I told you that why this is used is till this date, there was only SLM method. Okay, after this date, your WDV started. Okay, so which is why till this date, till AY 8788, you will directly get that particular assets accumulated depreciation till 8788. Okay, but as a matter of fact, an asset which would have been purchased in 85 would have become obsolete by now. Okay, so actually you will practically, there's no way we can use this point number A. Well, everything will fall under B only. Okay, 30 साल वगैरह सब तो कोई asset रहता ही नहीं. There's no asset which has that much of life. Anyway, so here point A and B means that just calculate the total depreciation on that particular asset. So here what I'm saying is, I have inherited an asset, okay, from my uncle. From my uncle, I have inherited an asset. Okay. So what has to be done is, now to find out what is the cost to me, first take the assets original cost. Okay. Okay. Then calculate the total depreciation on it. Okay. Again, for calculating total depreciation, these 2 points have been mentioned, but neither in your exams anytime. Okay. Ye differentiation is kabhi nahi pucha jata hai. Okay. This is never asked. It is only treated as one depreciation. Reason being, practically see, this is 87, 88. So just calculate, roughly if you calculate 13 years now, 20, 33, 34 years, 35 years back we are talking about. So there is no way you will have assets which are there now. Okay, so it is always these 2 points are treated as one. Theoretically ये रहता है तो आप लोगों को doubt होगा कि why they say depreciation allowed till 87, 88, then 88, 89. So that's why I'm telling you the difference. So you know, 87, 88 तक के it was only this one, SLM. After that, WDV concept was introduced. Okay. So till point A, take all SLM's depreciation straight away. And in point B, now that asset would have gone with a block, correct? Now you have to calculate depreciation of that asset, considering it is only one asset in that block, and calculate depreciation. Okay, so this is how. So ये बोल क्या रहा है in the end? Whatever is the cost to the previous owner, so just calculate the entire depreciation till date. Okay, some you might get directly in the books of account, some you might have to recompute. Okay, because of the block of assets. Okay, बस इतना ही है. Original cost, then calculate all depreciation, and this will be your, this WDV will be your actual cost. So inheritance के मामले में, where assets you have received, ठीक है, where you have received business assets की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बात फिर से करो, personal assets की बात नहीं कर रहे. Okay, so personal assets में क्या का depreciation, correct? So now where there is no question of depreciation in personal assets. In business asset, if you have inherited from someone, take the original cost. Okay, from the date of original cost till date, you find the depreciation, accumulated depreciation. It will always be given to you. Okay, so ये जो point है ना यहाँ पे, these 2 points, you will never have to use these 2 points. So दिया नहीं रहेगा कभी 87, 88. This is the one 88, 89 onwards. This is never given. I have never seen in any of the exams that I have appeared so far, and whatever papers I have seen, this ये नहीं पूछा जाता कभी. This is not asked. कई लोगों को मालूम भी नहीं रहता है क्या, why it is written like this. Most people don't know also. ठीक है. So चलो. So यहाँ पे original cost less depreciation should be your WDV. So this is straightforward logical, right? यही होना चाहिए ना. Whatever is his original cost, ठीक है, less depreciation, that should be the WDV, correct?
और आपको यू आर गेटिंग दिस एसेट नाउ, सो WDV शुड बी योर एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, दिस लॉजिकल, करेक्ट, इसमें तो कोई नथिंग टू डिस्कस, है ना, सीधा सीधा जो whatever is the written down value now, वो वैल्यू आपको मिल रहा है, राइट, that's what they are saying, so there is nothing to explain in this basically, right? So what they are saying is your WDV will become your actual cost in case of gift or inheritance, that's it. Okay, these points already have been trimmed a lot, so if you see that in a study material now, it is like written in a very complex way, काफी मैं ट्रिम करके ये डाला है इसको कि आप लोगों को विल अंडरस्टैंड इजीली, ओके। अब थर्ड केस, जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इट विल बिकम इंटरेस्टिंग, ठीक है। इंटरेस्ट ट्रीटमेंट इन केस एसेट इज एक्वायर्ड आउट ऑफ बोरोड फंड, ठीक है। इफ योर एसेट इज एक्वायर्ड आउट ऑफ बोरोड फंड, यानी मेरा एसेट है, ठीक है, I bought it for 1 lakh, but full 1 lakh loan लिया है मैंने, ठीक है, and every year I have to pay an interest of 10,000, ठीक है। सब क्वेश्चन है कि ये इसका क्या ट्रीटमेंट होगा ऑन एक्चुअल कॉस्ट, ओके। सो इसमें ये होता है, कभी भी जैसे हमने we had seen depreciation questions, correct, there you had purchase date, ठीक है, and put to use date, 2 dates, correct, and more importance was being given to put to use, correct, है ना। purchase हो गया तो आपको depreciation नहीं मिल रहा था, only after being put to use you are getting depreciation, you are not getting depreciation on purchase, right? So put to use was given more importance, correct. So here also same thing, okay, till your asset is put to use, okay, before you have put it to use, whatever interest you are paying, so you might have bought the asset 1 year back, correct, and you will put it to use, let us say after 1 year or after 6 months, right, but before you start using it you will still be paying interest on it, है ना, जो interest बनता है तो आप देते रहोगे, isn't it? So whatever interest you are paying till it is put to use, ठीक है, capitalize it, ठीक है। So interest okay before asset is put to use, after it is put to use, ठीक है। So we have treatment of interest before asset is put to use and after it is put to use, ठीक है। So for this, no, just capitalize it. So say for example, I have before put to use, I have paid an interest of 10,000 for 1 year. I didn't use it. Okay. So now what will happen is this 10,000, okay, it will be added to this. Okay, and your actual cost will become 1,10,000. And you will get depreciation on 1,10,000. After this, whatever interest you are getting, okay, it is separately deductible. Okay. Not as depreciation or something, it is interest, right? But you will get complete deduction every year, 10,000. Okay, you have a separate section, okay, section 36, in which you will get deduction from this. So anyway, I mean, you are getting deduction from your profit. Okay, you're getting it as a deduction in your P&L after it is put to use. But before put to use, whatever interest you are getting, you have to add to the actual cost. Got it? ठीक है? बस इतना ट्रीटमेंट है इसका. Okay. Now subsidies received from government, हमने देख लिया पहले, it is subtracted from the cost of equity acquisition. Correct? इसको फिर से बात करने की जरूरत नहीं है, right? Subsidies from government. अगर आपको 1 लाख का एसेट है, 1 लाख, and government is bearing 25,000. आपको गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दे दिया है, ओके, इधर आपको गिविंग बैक द कैश लेटर ऐसा हो,
या the value itself they are making it as 75,000 subsidy देके. However, there are different types of subsidies, right? So in any case, आपको you will get depreciation on this 75,000. ठीक है? Because you have already got back this 25, right? So you will not get a deduction of full 1 lakh now. It will be only 75,000. So the actual cost will be what? 75,000. ठीक है? Next point, ये बिल्कुल same as NVATable asset. तो पहले अपने NVAT credit हुआ करता था. Okay. So it's a pre-GST credit, okay, indirect tax credit. It's nothing but, you know, you get a credit on VAT. Okay. What happens is basically for NVATable asset कि आपको now जब हम asset लेते हैं, okay, when we purchase an asset, what is capitalized? Asset plus all indirect taxes, whatever you pay now, GST, VST जो देते हैं, correct? 5,000 says GST. All these are added and then the asset is capitalized, right? Indirect taxes so capitalize हो जाते हैं, correct? If I say, so this is 1,05,000. So if you are getting some credit जिससे आपको GST अभी नहीं देना पड़ रहा है, then this reduces by that amount, right? Correct? तो इसका भी treatment is same as this. आप अगर nature देखेंगे for NVATable asset, it is also subtracted from cost of acquisition. ठीक है? Because you get a NVAT credit. ठीक है? It's a tax credit. If you get that credit, your cost of acquisition reduces. ठीक है? Because to get your final cost of acquisition, you have to add all indirect taxes also, right? So if you're getting any exemption from indirect taxes, that reduces your actual cost. So ये दोनों point का logic is the same actually. They're operating differently, but both are subtracted from cost of acquisition. Both are same actually. You're getting some amount towards the asset. कुछ पैसे हमको मिल जा रहे हैं, अलग-अलग जरिए से मिल रहे हैं दोनों में. Okay. In both cases, you're getting it in different ways, but we're getting back some money, which is why it will be reduced from your actual cost. Okay. And अब real interesting एकदम last time में है, लेकिन we'll complete it. ये next 3 points are very good. Okay, very nice. Asset acquired from any person using it for his business or profession, ठीक है, to avoid tax. ठीक है. Actual cost determined by the AO is assessing officer. ठीक है. AO का मतलब है assessing officer. ठीक है. He does your income tax assessment with prior permission of the deputy commissioner. ठीक है. तो इस केस में AO has the power to determine your actual cost. ठीक है. तो क्या किया है यहाँ पे? Asset acquired from any person using it for his business or profession to avoid tax. ठीक है. तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे? एक एसेट है. ओके, ये है मिस्टर ए, दिस मिस्टर बी. ठीक है. ओके, बोथ आर नोन टू ईच अदर. ठीक है. तो अब ये हो रहा है कि Mr. A has, say, an asset of say some less value. It is got an asset of, let us say, 40,000. ठीक है. अब मिस्टर बी क्या बोल रहा है? He is giving this to Mr. B for 2 lakhs. 40,000 का एसेट का तो 2 lakhs तो वैल्यू हो नहीं सकता. ओके, इन अ वे ये दोनों दे आर कल्यूडिंग. ठीक है. यानी ये दोनों की मिली भगत है. मान लीजिए कि ये 40,000 का एसेट को मिस्टर बी बोल रहा है, यू गिव मी फॉर 2 lakhs. ठीक है. मैं तो 2 लाख का डेप्रिसिएशन मेरे को मिल जाएगा. ओके,
और ये जो बेनिफिट है आपका 1,60,000 का जो बेनिफिट मेरे को मिल रहा है, आई विल पास इट ऑन इन सम वे, कोई और तरीके से मैं कर दूंगा पास। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली आप समझ पा रहे हैं ना, दिस इज हैपनिंग व्हाई, दिस इज वेरी क्लियर। देखने से ट्रांजैक्शन में ये लोग आपस में पैसा इन्फ्लेट कर रहे हैं, ओके, सो दैट टैक्स का की चोरी हो सके। ये बेनिफिट कहीं से लेगा, और कुछ चीजें होते हैं सर्टेन थिंग्स से विच दे ट्रांसफर विदाउट अकाउंट्स, कुछ चीजें ट्रांसफर होती, ऐसे वैसे चीजों में दे एडजस्ट इट, ये जो है वट एवर बेनिफिट इज बीइंग पास्ड। ठीक है, तो ये केस में क्या होगा, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर बोलेगा, एओ जब आएगा देखेगा, ये बोलेगा नहीं सर मैंने 2 लाख का लिया, तो बोलेगा 2 लाख का का, बोलेगा ये तो 40,000 का है, तो दे कैन से 40,000, ही इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू से नहीं नहीं आपने चोरी किया ना, 20,000 देता हूँ, 20,000 का एसेट, एओ हैज द पावर टू डिसाइड इन दिस केस। ठीक है, नॉर्मली दे विल गिव व्हाटएवर इज द राइटफुल थिंग, ठीक है, बट लॉ हैज गिवन द पावर टू एओ। ठीक है, वो यहाँ 40,000 भी they can say 20,000 also। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? सही, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ फोर्जरी की पॉइंट है। wherever if assessing officer को, this is just one way I have told you, it can be in several ways, where assessing officer को पता चलता है कि नहीं this transaction is a sham, it's a false transaction just to inflate money to claim greater depreciation, okay, there he will bring it back to the normal value। ये ठीक है, सेम थिंग में दिस इज द सेम पॉइंट। ठीक है, अब ये सब पॉइंट्स जब आगे हम देखेंगे आपको ये लगेगा कि हाउ वुड दे हैव थॉट अबाउट इट। एक्चुअली इट इज नॉट अबाउट थिंकिंग, ये सब हुआ है, ये सब चीजें जो है ऑल दिस वेज ऑफ इवेडिंग टैक्स हैव हैपेंड। इसी तरह से तो आपका सब्जेक्ट डेवलप होता है, राइट, यू हैव सो मेनी अमेंडमेंट्स, यू गेट अमेंडमेंट्स। क्यों अमेंडमेंट्स होता है? एक तो ये है कि either the law has not been written properly, ठीक है, क्लियर नहीं है, तब अमेंडमेंट्स होता है। then there has been some ingenious way of tax evasion, now to correct that and bring it to purview of taxation, उसके लिए भी अमेंडमेंट्स होते हैं। ओके, सो चलो, सेकंड इज रीएक्विजिशन ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट। इसमें ये बोलता है रीएक्विजिशन ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट, ओके, WDV at the time of first transfer or price paid for reacquisition whichever is over। reacquisition में क्या है यहाँ पे, same cases, this is all 3 cases are cases of collusion। ठीक है, so what here I have done is I have an asset of WDV 20,000, ठीक है, I have sold it to this person। मैंने उसको बोला कोई मेरा दोस्त है, ओके, मैंने बोला अरे एक काम करो, मैं तेरे को ये बेचता हूँ 20,000 में, ठीक है, और तू मेरे को फिर वापस बेच दे इसको 2 लाख में। So what I am telling here is, okay, Mr. B and Mr. A, they are known to each other, okay, kind of business friends। So he has said that Mr. B has a written down value, asset written down value of 20,000. He has transferred to A, okay, for 20,000, and he has told A, now you sell it back to me for 2 lakhs। So the asset where he should have got 20,000 depreciation, now he will get 2 lakhs depreciation। Okay, so in this case, assessing officer what he will do is written down value to the original transferor. That is, he will say no, it is 20,000 only. He is the original transferor, right? So he will say that it will be 20,000 only, limited to 20,000। समझ गया ना? Okay. Okay. So और अगर इसमें बस ये बोल रहा है written down value at the time of the first transfer or price paid for reacquisition, whichever is lower। Why this lower is, this basically is to attack this only if it is higher, okay, but in case say it is lower 15,000, okay, if it is 15,000 then lower of the two will be taken, okay, this is just an adjustment to it, but basically this law has been made to counter this part when he is transferring at the same price and he is getting back at a higher price, okay। So the law is saying like, okay, in case he has actually bought it back for 15,000, then why will they give him 20,000? Correct, he has himself bought it। कभी कभी होता है ना,
कभी ये भी होता है कि we sell our assets, then when you get an opportunity you buy it back again. This also happens, not that it doesn't happen at all. ऐसा नहीं कि नहीं होगा, right? So अगर जिस प्राइस में मैंने बाय बैक किया हूँ, that is my price actually ना normal circumstances में, if there is no fraud involved. So इसीलिए वो पॉइंट डाला है whichever is lower. But basically ये जो है it is there to counter this point. जब वो 20,000 का चीज 2 लाख में वापस खरीदता है, okay, when he's buying a thing worth 20,000 for 2 lakhs. So actually these are all the same things. If you see, no, थोड़ा अलग अलग people, no, they have just अभी और एक चीज देखिए, ठीक है,